सुप्रभात फ्रॉम वाई। अगर आपको वाई के बारे में बताना है देन अ वेरी क्विक इंट्रोडक्शन। तो वाई एक हिस्टोरिकल, एक पिलग्रिमेज साइट है, एक टेम्पल टाउन है, एक कल्चरल सेंटर है जो करीब 2 घंटा पुणे से दूरी पे है, ऑन द वे टू पंचगनी एंड महाबलेश्वर। द टाउन एस्टैब्लिश्ड नेक्स्ट टू रिवर कृष्णा। कृष्णा का ओरिजिन महाबलेश्वर के पास से होता है, एंड देन द रिवर कम्स डाउन हियर एंड इट्स अ स्मॉल स्ट्रीम हियर बिकॉज ऑफ अ डैम अपस्ट्रीम, बट इट इज स्टिल अ ब्यूटीफुल रिवर एंड दैट एड्स अ लॉट ऑफ ब्यूटी टू द टाउन ऑल्सो। हम यहाँ पर अभी रुके हुए हैं एक पुराने वाड़ा में जो करीब 200 साल पुराना है। अगर आप फेमिलियर नहीं है इस टर्म से, तो वाड़ा का मतलब होता है महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्रियन स्टाइल, ओल्ड स्टाइल हाउस, जिसका एक there's a specific way of making this house. So there's a courtyard and it's a 4-sided house, very typical to the houses that you would see across the region here. So ये भी उसी architectural style को follow करता है. Lots of rooms here. I'm staying on a room on the first floor. And I'll show you around in the house in a bit. We are paying 600 rupees per head for a night, which is amazing. And this is by far my favorite part of the house. This is the झूला. अच्छा, बहुत सुंदर wooden झूला है with these brass supports. It's very nice, very comfortable, perfect place to have chai. For me, I was living here in my childhood, and like it's a very close place because my grandparents were living here. We have a house here, Old Vada. That's why it's very close to my heart. So just came to this place called Main Valley Ghat or something like that. I'll write the name correctly, जो भी इसका सही नाम है. तो ये करीब 15 मिनट ड्राइव पे है वाई के बाहर. जस्ट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्राइव. We're on the banks of River Krishna. It's not so big, but it's really charming river here. बहुत सुंदर लग रही है और मंदिर तो बहुत ही खूबसूरत है. There's practically no one here. So it's just us, frankly. So really have the place to ourselves. But yeah, I'm just mostly gonna walk around and explore the place because it's quite pretty. Yeah. So these temples are actually part of the Main Valley Vada. So Main Valley Vada जो है वो नाना फडणवीस वाड़ा के नाम से भी जाना जाता है, and it's a vada that's actually accessible. It's like an old, beautiful Maharashtrian style house जो म्यूजियम में कन्वर्ट हो गया है. So you can walk in there, see the place, really understand how people in Maharashtra or the really rich people in Maharashtra used to live. Though I must say that even the lifestyle of the kings and the ministers was quite frugal. So दिन का अंत कर रहे हैं मेन वाली वाड़ा में, और या समथिंग लाइक दैट. आई मीन इट्स अ टाउन. वाड़ा हमारे पीछे है, नाना फडणवीस वाड़ा. पूनम और मैं यहाँ बैठे हुए अमित का इंतजार कर रहे हैं. whenever he gets free we'll actually go back. So we are actually watching the sunset because we have to wait for him, which is a good thing right now because the sky is on fire. Cut. How come you knew about this place? Because when Amit and I were still dating, he had got me to this place in the daytime, in the monsoons, and the weather was perfect. Romantic moment. Very, very. So there's this river, which is Krishna River, and then we have a Vishnu temple and we have a Shiv temple. And I believe the town uses this place for a lot of festivals and a lot of gatherings. But when there are people are not around here, it's really peaceful to sit by the river, cool wind and very
Yeah, please. सो वहीं से ही थोड़ी सी दूरी पे आगे एक डैम है, ढोम डैम, जो कृष्णा रिवर के ऊपर बनाया गया है. इट्स अ ह्यूज डैम एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली द रिवर इज सो स्मॉल इन वही. बट द डैम इज़ नॉट वेयर वी आर एक्चुअली विजिटिंग अ टेम्पल कॉल्ड नरसिम्हा टेम्पल. ये काफ़ी पुराना मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है. एंड इवन दो वी थॉट देयर वुड बी नो वन, देयर आर एक्चुअली सम पीपल हियर, सो इट्स इवन अ वेल नोन प्लेस. सो यार, लेट्स जस्ट वॉक अराउंड एंड सी. आई एम गोना फॉलो अमित एंड पूनम एंड जस्ट गो वेयरएवर दे आर गोइंग. बट looks really nice from outside. Time to go in. So now I'm at Ganesh Temple. Ganesh Temple वाई का सबसे important temple है. It's an absolutely must visit temple if you're coming to the town. ये मंदिर वाई टाउन के अंदर ही स्थित है, तो आपको कहीं बाहर जाना नहीं है. And it's just walking distance from wherever you are in the town. So very easy to come here. ये जो गणपति मंदिर जो है ये बनाया गया था पेशवा के मामा ने, रास्ते बोलते हैं उनको, उनका सरनेम रास्ते था. सो गणपतराव भिकाजी रास्ते ने ये टेम्पल बनवाया था 1762 में. सो लोकल वाई के लोग सब उसको महागणपति बोलते हैं. देर आर अदर नेम्स लाइक बिकॉज द idol is very huge. It's almost 6 feet tall and like that. So इसको ढोला गणपति भी बोलते हैं, महागणपति, ढोला गणपति. It's like many names it has. It's very beautiful idol. नया प्लान, अभी हम पंचकनी में आए एक्चुअली खाना खाने के लिए, पर उसके बाद वी डिसाइडेड टू एक्सप्लोर अ लिटिल बिट. सो वी केम टू दिस प्लेस कॉल्ड टेबल टॉप. आई थिंक इट्स कॉल्ड टेबल टॉप, आई एम नॉट 100% श्योर. सो बेसिकली ये बहुत फ्लैट सा प्लेटू एरिया है, जस्ट बिहाइंड द मेन रोड और द मेन टाउन ऑफ पंचकनी. काफ़ी पॉपुलर जगह है, यहाँ बहुत सारे घोड़े हैं, लोग आते हैं. आज सैटरडे है, बट इट्स नॉट एज क्राउडेड, इट्स नॉट एज बैड एज इट कुड हैव बीन. सो या, आई थिंक we are okay. But the town looks really, really beautiful from up here. मैं पीछे देख सकता हूँ, पंचकनी है यहाँ पर, and there are these beautiful clouds. So it's stunning, and I'm kind of excited to see a bit more of Panchkani before we start our journey back to Pune.
फ्रैंकली वेदर का तो मतलब क्या कहा जाए, बहुत ही अमेजिंग हो चुका है। बारिश नहीं हुई, सो दैट्स गुड, पर धूप भी नहीं आई और बहुत सारा फॉग आ गया। इनफैक्ट इतना सारा फॉग आ गया कि हम वी काइंड ऑफ immersed in fog and we kind of lost our way and we didn't really go anywhere frankly to see the place, but it was amazing. It was so nice to walk around here and shoot and click, and there are very few people surprisingly, even though it's Saturday, so it was super nice. यहाँ पे एक चाय की जगह है, apparently that chai place is in a गुफा, like a real legitimate गुफा। तो अभी next plan है कि हम चाय पीने के लिए गुफा में जाएंगे and then we'll see what next can be done.